Hello everyone. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. So in the last two classes, we have discussed the common base configuration and common emitter configuration of the transistor. We discussed their input and output characteristics, the relationship between the voltage and current parameters on the input side as well as output side. And in this lecture, we will discuss the last configuration of the transistor, that is common collector configuration. And similar to the previous configuration, here we will have one of the terminals as common between input and output. So as the name specifies, in this we will have common collector point right here or right here. These are two diagrams showing the configuration and biasing for PNP and NPN transistors. Here we can see that the base and the collector is the region where we apply the input, and the collector and emitter junction that we will use for output. The collector is common between both the regions. The only difference between NPN and PNP will be the polarity of the biasing that we can see right here. It will be reversed, similar for VBB, and the direction of current. You can see in PNP transistor, base current is coming out, and in NPN, base current is going in. And that is also true for the other current parameters also. This is the same thing explained in the form of notations, the standard notations that we use for the transistor. Common collector, we will be common, and base current, emitter current, similarly for NPN transistor right here. Now, if you remember, if we try to draw the characteristic graph, let's first consider the output characteristic graph. So if you look at this diagram, we know that the output characteristics will have a relationship between these voltages and this current IE, keeping constant IB. That is, on one axis we will have VEC, not CE. VEC, and on y-axis we will have emitter current IE, and we will keep constant the input current, base current, that is IB. So our IB will be constant. Okay. Now please try to recall what we did in the output characteristics of the common emitter configuration. There was only one difference. Here we had collector instead of emitter, and here we had emitter instead of collector junction. There were current IE and there was current IC. That is the only difference between the common collector and common emitter configuration. The one thing that both of them have common is the base current IB. So this particular parameter is fixed for both the configurations. IB is constant and IB is the driving input current. Second thing is, in the common emitter configuration, the relationship between VCE and IC. Here we have relationship between VEC and IE. Now VCE and VEC, they are both the same except the polarity. So if it is 5 volts, it will be minus 5 volts. If it is minus 10 volts, it will be only 10 volts. The only
only difference between VCE and VEC will be the change of the sign. The other thing is the relationship between IE and IC. So IE and IC will be approximately equal to each other, because we have the equation which is IE equal to IC plus IB, and base current is generally in microamps. So approximately we can say that the emitter and the collector current are same if we take the ideal conditions, or if we take the value of alpha, the maximum value of alpha, that is equal to 1. So what we are trying to discuss here is that the output characteristics of common collector configuration is almost similar to the output characteristics of common emitter configuration. The only difference will be there will be IE on y-axis as compared to IC, and there will be VEC on x-axis in place of VC. So here the difference will be removed by taking the opposite polarity of the voltage, and here we can say that these both the values are almost same. So the output characteristics of common collector will look like exactly the output characteristics of this common emitter. ठीक है, तो उसमें आपका जो डिफरेंस है वो सिर्फ वैल्यूज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आता है. ठीक है, जो ये वाली वैल्यूज है हमारी, इसमें ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं आएगा क्योंकि आईसी और आईई है जो वो ऑलमोस्ट आपके इक्वल रहते हैं. ठीक है, तो हम अगर वो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखें तो भी हमारा काम जो है वो चल सकता है. उसके अंदर थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफिकेशन एंड वी विल गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सेम इज द केस फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी किस किस के बीच में होती थी? Between base and emitter voltage and base current IB. So let me draw here. ठीक है, यहाँ पे हमारा होता था VBE और यहाँ पे हमारा हो जाएगा IB. And the one parameter that we used to keep constant was VCE. Here we have to keep constant VEC. So VCE and VEC, if we are keeping VCE constant, then automatically we are keeping VEC constant. The rest of the things are same. Here there will be one slight difference between VBE and VBC, base to collector and base to emitter. तो इसमें भी आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी जो कि एमिटर में भी थी, जो हमारा एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिर्फ वैसा ही दिखाई देगा. There will be some changes in the notation. Instead of VCE, we will write VEC. And if it was equal to, let's say, 5 volts, so here we will say this will be equal to minus 5 volts. There will be very less difference between the characteristics of common emitter and common collector configuration. All right. Any doubt in this? एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर में बस पोलैरिटी का डिफरेंस होगा. Polarity and there are some notations. जैसे VCE की जगह VEC आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे VBE की जगह VBC आ जाएगा. और
कलेक्टर करंट की जगह एमिटर करंट आ जाएगा। सिमिलर हम इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर करंट। तो उस केस में अगर आपका बेस करंट हो तो माइक्रो एम्पियर। हाँ, दैट्स द रीजन। ओके ओके सर। now let's try to discuss one more important topic, which is the limits of operation of any transistor. So here we have a characteristic curve of a transistor. You can see that on this axis we are having VCE and here we are having IC. So this is a characteristic curve for common emitter configuration transistor. By limits of operation means we cannot apply the input voltages and output voltages as per our desires as much as we want. There are some limits that we have to be within the range if we if we try to bias the different regions of the transistor. That will be decided by the specification sheet of the transistor. उसमें हमारे कई तरह की specifications दिए होते हैं that this particular parameters value should be within this range if you want to act the transistor in particular zone. So if we want the transistor to be operated in the active region that we generally want to do, the other two regions, which is the cutoff region and the saturation region, these are very limited applications and we generally want our transistor to operate in this active region. So for that, one consideration is consideration of power. And other consideration is the individual values of the parameters. That is, this, if you remember, this is the value of ICEO. So your collector current should be higher than this value to be in the active region. Similarly, your VCE voltage should be greater than this particular value, VCE saturation. Otherwise, your transistor will be in the saturation region that we don't want. So these are two conditions that are directly related to the parameters minimum and maximum values. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यूज हम डिसाइड कर सकते हैं करंट की by looking at the value of ICEO, and minimum value of VCE can be decided by taking the value of VCE saturation to avoid the transistor to go into the saturation region. Now, how do we limit the maximum voltage that we can apply across the collector emitter and the maximum current through the collector? For that, we have to take into consideration the power specifications of the transistor. So it will be given that a transistor can handle at max the 300 millivolt of the power dissipation in this device. So if your power dissipation is greater than 300 millivolt, in that case, the transistor will burn out and it will not work properly. So let's say we have the condition of 300 millivolt. So what we can do is we can draw another curve on this particular characteristics curve, which will be our power curve. We can say that that will represent the power dissipation in the device. And for that, we will have different values of VC and IC. So suppose we are having this value, VCE max value is 20 volt. So if VCE is maximum value is 20 volt, in that case, the maximum current that we can allow through the collector will be decided by this value. So we will divide 300 milliwatt with 20 volt, and what we will get, that will be 15 milliampere. So you can see right here that this particular point corresponds to 15 milliampere and 20 volt. ठीक इसी तरह आप दो तीन पॉइंट को और ड्रॉ कर लीजिए. एक बार आप मान लीजिए कि आपकी करंट की वैल्यू जो है वो 30 मिली एम्पियर है. तो इफ योर करंट इज 30 मिली एम्पियर,
at that point, using this particular value, the voltage between collector and emitter that we can have, VCE, that will be 10 volt. So we will have another point right here. ठीक है, ऐसा ही एक पॉइंट हमने और बीच में ले लिया यहाँ पे. ठीक है, 25 एंड 12. इस तरीके से हम पॉइंट्स को बनाते जाएंगे. ठीक है, एक मिनिमम के लिए आप हम यहाँ से ले सकते हैं 5 वोल्ट के लिए. तो उसके बाद जब हम इन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे तब हमारा पावर का कर्व बनेगा. जब हम इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, इस तरीके से और डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कराते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे और उनको फिर बाद में ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये वाला कर्व बन जाएगा. ठीक है. नाउ इफ एनी ऑफ द पैरामीटर्स वैल्यू एक्सीड्स विद इन exceeds out of this range, then power dissipation will be greater than 300 millivolts, and that we don't want. ठीक है, इस कर्व से नीचे आपकी दोनों वैल्यूज रहनी चाहिए. इस कर्व से ऊपर अगर चले गए तो प्रोडक्ट ऑफ VC एंड IC विल बी ग्रेटर देन 300 millivolts. आप इसको अपने मैथमेटिक्स में जो हम ग्राफ बनाते हैं वहां से भी समझ सकते हो. जो इनइक्वालिटी के ग्राफ बनाते हैं, x should be greater than equal to 5, y should be less than equal to 7, इस तरीके. So this is the curve of equality. On this curve, we are limiting the operation. This is the maximum range of the voltage and current such that their product is equal to 300 millivolt. इससे ऊपर जाएंगे तो हमारी PC की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इससे नीचे रहेंगे तो PC की वैल्यू रेंज में रहेगी. So from there we will get the value of IC max, VCE max. ठीक है, minimum values will be decided by the saturation voltage VCE saturation right here, and for current it will be collector to emitter current, and we keep the base open, that is ICE4. ये जो आपका यहाँ पे दिया. So if we keep the biasing voltages and biasing current in this particular range, then we will limit the operation of the transistor into the active region, that is this particular region. हाँ, आपको कोई स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन है जिसमें आप चाहते हो कि आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ और सैचुरेशन में ही जाए, तो फिर आपको उस हिसाब से आपकी जो लिमिट्स हैं, जो वो बाइसिंग है, वो उसकी करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिसाइड द लिमिटेशंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर. एनी डाउट इन दिस गाइस? No, sir. Okay. Now let's move on to the next topic, which we also did for the diodes, that is the operating point on the characteristics curve of the diode. Now we will discuss the operating point of the transistors. Before discussing that, we have to remember these three basic equations in all of the configurations of the transistor. ट्रांजिस्टर को किसी भी नेटवर्क में आपने कनेक्ट किया हो, ठीक है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आप उसको यूज कर रहे हो, these are few relationships that will be there and that we can use interchangeably. किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी नेटवर्क में हम यूज कर सकते हैं. The base to emitter voltage is generally kept as 0.7 volt, जो कि हमारी सिलिकॉन डायोड के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो जंक्शन वोल्टेज होती है उसके हिसाब से. ठीक है, देन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट in emitter, collector and base.
So I is nearly equal to IC अगर हम करना चाहें तो, otherwise this formula can be used. And the relationship between collector and base current IB. So IC is equal to beta times IB. Beta times IB plus IB will be IE, that is beta plus 1 times IB. That will be our emitter current. Base to emitter voltage we will keep 0.7 volt. Okay, so as we also discussed in the case of diodes, what do we mean by operating point is that if we keep the biasing, you know that we have to bias the base emitter region, we have to bias the collector emitter region. So those DC voltages that we use to bias the transistor, that will decide the operation of the transistor, that will decide the behavior of the transistor to the input AC signal that we will apply. वो जो दो वैल्यूज हैं VC और IC की वैल्यूज जो हैं, उनसे हमें ये पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर कितना एम्पलीफाई करेगा, क्या वो इनपुट सिग्नल है उसकी पूरी की पूरी रेंज को एम्पलीफाई कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, वो हो सकता है उसके कुछ पार्ट को वो ठीक से एम्पलीफाई कर रहा हो, कुछ को अलग तरीके से एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा हो ठीक से। So that all will be decided by the operating point. So selection of the operating point is a very important step while we design the circuits using the transistor. Now let's discuss how do we do this. So this is a output characteristic curve of transistor. On one axis we have VCE and on one axis we have IC. So let's say on this characteristics curve we have marked 4 points A, B, C and T. We will discuss how selecting each of them as an operating point, how we can how the behavior of the transistor changes. So suppose first of all we have this point A as the operating point. That means VCE is also 0 and IC is also 0. That means we have not biased the collector to emitter region. हमारा जो collector हम यहाँ पे एक बार बना लेते हैं. So this is our VCE. ठीक है, हमने कोई बायसिंग यहाँ पे नहीं की है, तो उस केस में आपका ट्रांजिस्टर पे आप कुछ भी इनपुट लगाते रहिए तो वो हमारा काम जो है वो नहीं करेगा। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वो आपका बिल्कुल अनसर्टेन रहेगा। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई बायसिंग कलेक्टर और एमिटर रीजन की ना हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका इनपुट सिग्नल ऊपर नीचे हुआ, सपोज कीजिए ये तो हमने ठीक से बायसिंग इसकी कर दी है, दिस इज अवर NPN, so this will be P and this will be N. So due to this particular voltage VBE, there will be current in the base into this junction. तो जो भी आप इनपुट सिग्नल लगाते रहो, इसके अलावा भी हम लगाते हैं, आप आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे, तो वो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So we don't want A as our operating point. That means we do not want the collector to emitter junction as no bias, with no bias. So let's move on to the second point, that is point B. If we select point B as our operating point, and let's say we are applying an input signal of 5 volt, 5 volt peak to peak. So that means 2.5 volt उसकी maximum positive voltage हो सकती है, 2.5 volt minus 2.5 volt उसकी minimum voltage हो सकती है. So if this is the biasing that we have used, that means we are using VCE around 7 volt or 6.5 volt, and this is the collector current at that particular point. तो जब आपका VC इनपुट सिग्नल में 2.5 वोल्ट प्लस होगा,
तो 2.5 वोल्ट आप इसमें प्लस करेंगे तो वो आपका इस डायरेक्शन में प्लस होगा, ठीक है, तो वो यहाँ तक जा सकता है। यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, तो वो आपका सिग्नल यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2.5 माइनस किया तो वो आपका इस तरफ जा सकता है। तो इवन इफ द योर इनपुट सिग्नल स्विंग्स in the range of plus minus 2.5 volt, that in that case also the transistor will operate in the active region. It will not go out of the active region. क्योंकि आप इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो द ओवरऑल वोल्टेज दैट विल बी अपीयरिंग दैट विल आल्सो चेंज। तो उसका जो स्विंग है उसको हम बोलते हैं कि दैट विल चेंज। बट इनपुट के सारे स्विंग को अगर वो उसकी रेंज प्लस माइनस 2.5 वोल्ट है तो दिस ऑपरेटिंग पॉइंट कैन हैंडल दैट प्रीटी वेल। हम चाहते थे कि हमारा ट्रांजिस्टर ड्यूरिंग दी ऑपरेशन हमारा एक्टिव रीजन में ही काम करे। तो अब इनपुट की वोल्टेज जो है हमारा इनपुट सिग्नल है उसकी सारी रेंजेस के लिए हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही काम करेगा। तो हम अपने ट्रांजिस्टर को इस तरीके से बायस करेंगे कि उसमें से आपका बेस करंट जो है वो इतना ये वाला वैल्यू हम मान सकते हैं कि बेस करंट 30 माइक्रो एम्पियर रहे और VCE जो है वो इस वैल्यू के बराबर है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो दिस ट्रांजिस्टर विल वर्क इन एक्टिव रीजन, ठीक है। You will understand it more clearly when we will discuss all these points. Now let's focus on the point C. Point C is also lying in the active region, but it will not, but the transistor will not always be in active region for the same input signal that we applied before. हमने सेम यही सिग्नल अप्लाई किया, तो उस केस में क्या होगा, आपका थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा यहाँ तक और थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो सकता है यहाँ तक। तो अगर पॉजिटिव साइकिल्स हैं उसको तो वो एक्टिव रीजन में ही रखेगा, बट ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल्स योर characteristics curve is in the non-linear relationship, non-linear region, that is in the saturation region it is working. So the transistor will amplify positive half cycle with different amplification factor and negative half cycle with different amplification factor. एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो आपका जो है सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो आपका एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। So that is the disadvantage of using this particular point C as an operating point. It will work very fine if we are using small signal input voltage. अगर आपकी इनपुट वोल्टेज है ही 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट तक है तो उस केस में तो ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट भी हमारा काम कर जाएगा फॉर वेरी स्मॉल सिग्नल, स्मॉल वैल्यू सिग्नल। Otherwise, this point or this operating point is lying in the vicinity or in the proximity of the origin. ये origin के आपका पास में है, काफी करीब है। This is near to VCE equal to 0 and IC equal to 0. और IB भी आपका 0 के पास में है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा रेंज को ये जो है वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, एक पर्टिकुलर थोड़ी वेरी स्पेसिफिक रेंज पे ही ऑपरेट कर पाएगा। Otherwise it will go into the saturation region and it might also go into the cutoff region. अगर बेस करंट 0 से कम हो गया तो कट ऑफ में भी जा सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट D. Point D is also lying in the operating in the active region. If you consider the same signal, अगर आपका -2.5 वोल्ट है तो ये आपका थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो सकता है। So in that case it is also in the active region. उस केस में थोड़ा सा बेस करंट भी हमारा कम हो सकता है, तो वो पॉइंट हम इस तरफ भी आ सकते हैं। बेस करंट कम हो गया तो स्टिल इट इज इन दी एक्टिव रीजन। बट अगर आप उसको बढ़ा देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द इनपुट सिग्नल, दिस पॉइंट माइट गो इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन, जो कि हमारे लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन जो कर्व है, पावर डिसिपेशन वाला जो कर्व है उससे आगे है। तो योर transistor is in active region in this particular at this particular point also, but at this point the transistor will burn out. It is acting beyond its limitation.
तो इसकी पावर कवर मैक्सिमम कब था ये उससे बाहर जा चुका है, that we also don't want. Now similar to this point C, this will also work if we are using very small signal, very small values signal. ठीक है, so if we look at this all this discussion, if we try to understand is that we want our operating point somewhere in the middle of the active region, and that way we can see that the relationship between the relationship between different parameters is such that transistor will always be in the active region during all the values of the input signal, during the whole range of the input. एक्सक्यूज मी सर, Yes, तो जिस केस में हमने 5 वोल्ट लिया, अगर उसको हम 20 वोल्ट ले लें तो बी में भी वो हाँ, बर्न आउट हो हाँ, सकता है। वो भी बर्न आउट हो सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने तक के वैल्यूज ले रहे हैं. जनरली दिस टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन इज यूज फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल के ऑपरेशन के लिए हम करते हैं. ठीक है, अभी हम देखिए ये कॉमन एमिटर आपका वो लिया हुआ है हमने कॉन्फ़िगरेशन. अगर लार्ज वैल्यू चाहिए तो कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर में से किसी को यूज किया जा सकता है. समटाइम्स वी नीड हाई एम्पलीफिकेशन फैक्टर. अगर हम एम्पलीफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग इनपुट सिग्नल एट वेरी लो वोल्टेजेस ताकि हम उनका एम्पलीफाई कर सकें. If you already have 20 volt, 25 volt, then we don't need any what we can say amplification. ओके, Okay, so anyone any doubt in this, in selecting the operating point? Yes. 5 वोल्ट VBE की वैल्यू है। नहीं, 5 वोल्ट क्या होता है, हम अब आगे देखना है. यहाँ पे हम एक ना इनपुट सिग्नल और लगाएंगे. जो हमारा ये वाला पॉइंट है बेस के ऊपर, यहाँ पर हम बेस और एमिटर के बीच में इनपुट सिग्नल और अप्लाई करेंगे. तो बेस के ऊपर आपकी बायसिंग का सर्किट ये वाला रहेगा, जो ये वाला लूप है, और इनपुट सिग्नल अलग से आएगा उसके पास. इसी तरीके से कलेक्टर में हमारी ये वोल्टेज अलग रहेगी. हम यहाँ पे रजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे एंड वी विल टेक दी आउटपुट फ्रॉम दैट रजिस्टर. तो इन वैल्यूज से हमारी सिर्फ एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलती है. ठीक है, इन वैल्यू से सिर्फ ये पता चलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं. उसके बाद जैसे जैसे इनपुट सिग्नल में कुछ चेंजेस आएंगे वैसे वैसे ट्रांजिस्टर का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा. हम ये चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो बिहेवियर है ड्यूरिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ इनपुट वो हमारा सेम रहे. तो उस तरीके से हम इस तरीके के ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर इससे थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इससे थोड़ा पीछे आया तो भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बेस करंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है. जब वो इस एक्सट्रीम पॉइंट पर है तो भी उसका बेस करंट में बहुत कम वेरिएशन आया है. बेस करंट पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी. ठीक है, तो सॉरी दिस चेंज जो हम देख रहे थे वो हमारा आई सी में ही चेंज आ रहा है. ठीक है, ये हमारा 30 माइक्रो एम्पियर पे था, ये 20 माइक्रो एम्पियर पे है. अगर आप यहाँ पे लाई कर पहुंच जाते हैं किसी तरह तो उसका भी अगर आप कर्व बनाओगे तो वो यहाँ तक बनेगा. तो दैट इज ऑल्सो वेरी लेस. तो हम ये चाहते हैं कि बस किसी तरह वो एक्टिव रीजन में काम करे और उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो यूनिफॉर्म रहे, वो कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल. इज दैट ओके? यस सर। ओके. So for the BJT to be biased in its linear or active operating region, the following must be true. ये दो हमारी कंडीशंस हैं वो हमें याद रखनी है. That the base emitter junction must be forward biased, and by forward bias we mean P region voltage should be more positive, not connected to the positive supply. It should be more positive. ऐसा भी हो सकता है कि P region में आपका -1 वोल्ट है लेकिन N region में -6 वोल्ट है. So your P region is more positive as compared to the N region. And resulting forward bias should be around 0.6 to 0.7 volt.
अगर 0.6 to 0.7 वोल्ट बेस एमिटर जंक्शन के बीच में हमारा पोटेंशियल लाई कर रहा है, so that particular region will be forward biased and first condition will be satisfied. Second condition is the base collector junction, it must be reverse biased with the reverse bias voltage being any value within the maximum limits of the device. ये हमारी जो भी उसकी लिमिट्स रहेंगी उस विद इन दैट लिमिट आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। VCE नेक्स्ट से कम होनी चाहिए, VCE सैचुरेशन से कम होनी चाहिए। इस तरीके से बेस कलेक्टर जंक्शन है तो उस हिसाब से उसकी वैल्यूज भी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, बट जो भी स्पेसिफिकेशन शीट दी हुई है उसकी रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नाउ इस केस में हमारी इसने रेंज बताई हुई है, तो रेंज बताई हुई है तो इसमें हम अपने उस रेंज को पर्टिकुलर सेट करेंगे एंड दैट विल डिसाइड आवर ऑपरेटिंग पॉइंट। वो हम कई सारी चीजें देखेंगे, ट्रांजिस्टर की स्पेसिफिकेशन शीट सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, इनपुट सिग्नल की रेंज को ठीक से ऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, सो this we will discuss in the next class, that how we can bias the transistor in different ways. There are 2-3 methods in which we can bias the transistor. This is our first method of biasing, that is fixed biasing circuit. We will discuss these circuits in the next class, and in this class we have discussed the operating point of the transistor and common collector configuration. A common collector configuration is similar to common emitter configuration with slight modifications in the notations and the polarity of the voltage and current. उसमें आपको करंट की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि करंट इन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, इफ दे आर एंटरिंग द ट्रांजिस्टर, the emitter is leaving the transistor. If collector and base current are leaving the transistor, then your emitter current is entering the transistor. ठीक है, so वो दोनों के characteristics आपकी similar रहेंगी. Then the limits of operation, how do we limit the operation of the transistor within by using the specification sheet values, using the power rating, using minimum current and maximum current, using minimum voltage and maximum voltage. Then these 3 basic equations that will be used in all the configurations and selection of the operating point of the transistor. How we can select an operating point so that it is always in the active region. We can change some we can select any operating point this particular region if we know the input swing of the signal. How much swing is of the input signal, we can decide the operating point for different amplification factors. So that is all for today. If you guys have any doubt, you can ask. Okay, and